हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्चुअल क्लासरूम ऑफ द क्वेस्ट। आज आम कौन करिपा मैग्नेटिक फील्ड विषय रे जानिबा। ठीक अछि। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड माने जदि गोटे मैग्नेट अछि किबा मैग्नेटिक पोल अछि किबा गोटे करंट फ्लो होची गोटे कंडक्टर रे, ताहले हमें ता चारिपटे रे मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करि परिबा। हैला, पहले मैग्नेटिक फील्ड रा स्ट्रेंथ टाको हमको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बा मैग्नेटिक इंडक्शन बा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोली कह जाए। है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ता माने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स passing through a surface area which is kept perpendicular to the magnetic flux per unit surface area। এটা হচ্ছে definition of magnetic flux, sorry flux density। এটা হচ্ছে definition of magnetic flux density। है हेले मैग्नेटिक फील्ड रे जदि गोटे चार्ज पार्टिकल टे रेस्ट रुहे ताहले इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी मैग्नेटिक फोर्स। है या पर कौन सी मैग्नेटिक फोर्स पड़ो ना, किंतु जदि गोटे चार्ज पार्टिकल रे मूव करुच्ची ताहले ता चारिपटे कौन हम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हम एंड इट विल इंटरैक्ट विथ द एक्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड। है जो फील्डटा अच्छी ता संगे ये इंटरैक्ट करिवो आउ ड्यू टू दिस इंटरैक्शन कौन हम चार्ज पार्टिकल उपरे कि छोड़े फोर्स एक्सपीरियंस हम। ता अर्थ पार्टिकल टा जो डायरेक्शन रे मूव करथिला से डायरेक्शन रे मूव न करके से कौन करिवो तार डायरेक्शन चेंज करिवो काई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फोर्स मैग्नेटिक फोर्स ऑन इट। हैला हेले मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल को फैक्टर ऊपर डिपेंड करछि, चार्ज ऑफ द पार्टिकल ऊपर डिपेंड करछि, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऊपर डिपेंड करछि आओ थीटा ऊपर डिपेंड करछि व्हिच इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर मध्ये डिपेंड करछि, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऊपर डिपेंड करछि। जो फील्ड रे चार्ज पार्टिकल टा मूव करछि से फील्ड रो स्ट्रेंथ ऊपर डिपेंड करछि आओ थीटा इज द एंगल बिटवीन मोशन ऑफ द पार्टिकल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ए दीटा भितर मध्ये थीटा ऊपर मध्ये डिपेंड करछि। केमिति डिपेंड करछि F is equal to force, magnetic force on the charged particle is equal to Q into V cross D, cross product। है ना, ता अर्थ कौन फोर्स टा को डायरेक्शन रे एप्लीकेबल होची, जो डायरेक्शन रे फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, जो डायरेक्शन रे तमरो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड रहबो। है ना, ताहले perpendicular to both force is perpendicular to both velocity and magnetic field intensity। हैला हेले आमे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को केमती डिफाइन कर परिए ताहले जदि आमे कहबा चार्ज Q is equal to 1 coulomb or unit charge and V is equal to 1 meter per second or unit velocity and theta which is the angle between V and B, or you can write it like Q V B sin theta n cap, isn't it? n cap hobo hela which is perpendicular to both V and B। hela hele theta ऊपर डिपेंड करछि, theta ता जदि हमें sin theta माने एठी कोन होबो जदि 90 डिग्री नै जिवा sin theta will be maximum। है ताहले F is equal to magnetic force on the charge will be equal to the magnetic field strength। magnetic field strength संगे समान हो तो हमें कौन डिफाइन करिबा magnetic field टा को it is the force experienced by a unit charge moving with unit velocity which is moving perpendicular to the field strength। है ना, so that force will be equal to the field strength, magnetic field strength। that of course it is the magnitude, this is not equal but it is the magnitude of the force magnitude is equal to the magnetic field of magnitude of the magnetic field। okay, so this is like this we can define the magnetic field, or you can also state the Coulomb's law for magnetostatics, that is equal to F is equal to mu 0 by 4 pi m1 m2
divided by r square. Here also we can define this magnetic field is equal to F by m naught, which is equal to your mu naught by 4 pi m divided by r square. एक केस मध्य आमे मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर पाइबा है ना फोर्स एक्सपीरियंस ऊपर दे के डिफाइन को नहीं फोर्स एक्सपीरियंस नहीं के डिफाइन कर पाइबा और मैग्नेटिक पोल को नहीं के मध्य हमें डिफाइन कर पाइबा और करंट को नहीं के मध्य हमें डिफाइन कर पाइबा बैट्स लॉ रे हमें करंट को नहीं की मध्य डिफाइन कर पाइबा magnetic flux. So, magnetic induction at a point inside a magnetic field can be defined as the force experienced by a unit charge which is moving in the magnetic field right angles to it and with unit velocity. So, we can define like this. So, what are the units of magnetic induction or magnetic field strength? Those are in SI system तार यूनिट हला टेस्ला हला इन सीजे सिस्टम यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज गॉस आ कन्वर्जन हला 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 to the power 4 गॉस एटा तो आमे आगरु जानि जे ऑलरेडी पढ़ी छै या विषय रे हां अच्छा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जेमति हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थाए सेमति मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहे जेमति जदि गोटे फील्ड रे मैग्नेटिक फील्ड रे जदि गोटे यूनिट नॉर्थ पोल को हमें फ्रीज कर देबा छाड़ देबा टू मूव देन इट विल टेक ए पर्टिकुलर पाथ that imaginary line in which the unit north pole will move is known as its lines of force or field lines. The number of field lines per unit area is your magnetic field density or intensity, magnetic field intensity. The number of total number of flux lines which is magnetic flux. So magnetic flux को केमते हम डिफाइन करबा magnetic flux को डिफाइन करबा जे it is denoted by magnetic flux is denoted by phi m. सेटा जेंते हम phi b phi e लिखुले से हम लिखो phi m और phi b हला magnetic flux phi b तो phi b सीडी हम लिखुले इलेक्ट्रिक फील्ड रे हम लिखुले E dot ds इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इंटेंसिटी डॉट ds और सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इथे हम लिखियो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी डॉट ds और वी कैन राइट b डॉट n cap माने डायरेक्शन ऑफ the elementary surface which is perpendicular to the surface itself ds हला एवला डिफाइन करिया ताले यार यूनिट्स कोन आसीबो फ्लक्स रा यूनिट कोन आसीबो फ्लक्स माने हला तमरो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया तो यूनिट हला इन SI सॉरी मैक्सवेल और 1 मैक्सवेल इज इक्वल टेस्ला 1 Maxwell is equal to 1 Tesla into 1 meter square. है ना और इन SCG सिस्टम फ्लक्स डेंसिटी फ्लक्स ये है ना यूनिट है ना गॉस into सेंटीमीटर स्क्वायर है ना हमें ऑलरेडी जान छे अकॉर्डिंगली तर डायमेंशन भी हमें फिक्स कर परबे जान परबा है ना तापरे हम देखि दवा है ना लॉरेंस फोर्स होची
जदि गोटे चार्ज पार्टिकल टे गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड गोटे गोटे रीजन ऑफ स्पेस रे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को एक्जिस्ट करछन दी जण जाक फील्ड गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड अछि मैग्नेटिक फील्ड भी अछि तो जदि चार्ज पार्टिकल टे से फील्ड रे जदि से रीजन रे मूव करिवो जदि रेस्ट रहबो ताले मैग्नेटिक फील्ड रो इफेक्ट तापर जीरो रहबो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड रो फोर्स टा रहबो आउ जदि मूव करिवो विथ सर्टेन वेलोसिटी विथ सर्टेन एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड ताहले कोन हबो तापर किछु गोटे फोर्स जनरेट हबो ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड आल्सो हला तो नेट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल विल बी इक्वल टू द फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड हला तो नेट फोर्स होची लॉरेंस फोर्स इज इक्वल टू योर नेट फोर्स ड्यू टू तमरा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड पाई फोर्स केते आसीबो q चार्ज पार्टिकल जदि चार्ज ता q थिबो ताहाले इलेक्ट्रिक फील्ड पाई फोर्स आसीबो q इनटू e इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट प्लस मैग्नेटिक फील्ड रो कते वैल्यू आसीबो चार्ज इनटू वेलोसिटी क्रॉस द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड दैट हला तो एटा जदि हमें q टाको कॉमन नै जिमा ताहले एटा हे जबो e प्लस v क्रॉस v एटा होची नेट फोर्स व्हिच इज experienced by the charged particle while moving inside a electric and magnetic field if both are coexisting in a region. So this force is given by the or known after the Lorentz, or this force is known as the Lorentz force. This is the formula for the Lorentz force. Okay. अच्छा Fleming's left hand rule and right hand rule. Fleming's left hand rule रे कोन आमे कोचे Fleming's left hand rule रे the direction of the force experienced by the conductor which is carrying current देखो आमे जंती चार्ज पार्टिकल के मूव करियो मैग्नेटिक फील्ड रे ताहले चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस सम फोर्स सिंपली जदि चार्ज टा मूव करियो इनसाइड ए कंडक्टर दैट इज इट विल गिव राइज टू करंट हला तो इलेक्ट्रिक करंट जदि गोटे कंडक्टर रे मूव करूची आ सेटा गोटे मैग्नेटिक फील्ड रे रखा हला ताहले इट विल एक्सपीरियंस सम फोर्स ड्यू टू दैट फोर्स इट विल मूव हला तो जो डायरेक्शन रे मूव करिवो जो से डायरेक्शन के तार फोर्स पड़थो तो डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स ऑन द चार्ज on the current carrying conductor is given by Fleming's left hand rule हला जदि गोटे current carrying loop थिबो गोटे magnetic field रे गोटे current carrying loop टे थिबो हला ताले current due to the flow of the current in the loop that will experience some torque हला सेथिरे तमरा कोन होची मोटर जनरेटर और मोटर एटा होची प्रिंसिपल फॉर जनरेटर एंड दिस इज द प्रिंसिपल फॉर मोटर हला मोटर टा सेही प्रोसेस रा होची तमर मैग्नेटिक फील्ड ते थिबो सेथिरे जदी करंट गोटे कॉइल ते थिबो ता भितरे करंट टा फ्लो हला कॉइल भितरे ताहले इट विल देयर विल बी ए टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल हला दैट विल रोटेट द कॉइल हला तो मोटर रा प्रिंसिपल होची फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ठीक है अच्छा तापर हम देख देबा वायर सब अच्छा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टॉर्क on the current carrying coil tau is equal to Na tau is equal to NIB A sin theta है ना अच्छा कोड़ा कौन N होची number of turns in the coil I होची current flowing through the coil B होची strength of the magnetic field, A होची area of the coil, और theta होची angle that the area make with the magnetic field.